नमस्ते, मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख और मेरा रुख पर हमारा स्पोर्ट्स शो स्पोर्ट्स दिस वीक। आज हम संडे के बजाय वीक के बीच में आ रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है और वर्ल्ड कप शुरू होने के पहले एक बार उस पे बात तो बनती है। कल रात को आरसीबी ने वुमेन्स जो है वो डब्ल्यूपीएल जीता, सेकंड टाइम जीता। सो कांग्रेचुलेशन टू देम। और Yes, दिल्ली कैपिटल जो है वो अनफॉर्चुनेटली 4 बार फाइनल में जाके चारों बार वो लाइन क्रॉस नहीं कर पाई। सो कमिग्रेशन टू देम एंड बेटर लक फॉर नेक्स्ट टाइम। आज के शो में मेजरली हम जिन चीजों पे बात करेंगे वो है वर्ल्ड कप के 4 सेमीफाइनलिस्ट कौन हो सकते हैं, फिर इंडिया पाकिस्तान मैच को लेकर जो इशू चल रहा है उसके ऊपर बहुत सारी बातें, बहुत सारे इनपुट्स और बहुत सारे एक्सपर्ट अपने अपने व्यू दे रहे हैं, पर हम लोग उसका एक डिटेल एनालिसिस करेंगे और एक फेयर एनालिसिस करेंगे कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्यों ये इशू हुआ और भी सारी चीजें। और प्लस हम लोग भारत के टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर भी बात करेंगे कि क्या संजू 11 में होंगे या ईशान होंगे। इन चीजों के ऊपर लेके आज का ये वर्ल्ड कप प्रीव्यू शो आप इसे कह लीजिए ये है। सो अनूप, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने इस वीक के बीच में समय दिया, धन्यवाद। absolutely wonderful राहुल। अच्छा लग रहा है शो करने के लिए एंड ऑब्वियसली वर्ल्ड कप बहुत बड़ा इवेंट है जो अभी चालू होने वाला है। तो जैसे आपने कहा प्रीव्यू तो बनता है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। सो अनूप, सबसे पहले बात करें कि वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं हम वो लोग, वर्ल्ड कप का प्रीव्यू शो कर रहे हैं। सो अगर मैं थोड़ा सा क्विकली आपको ग्रुप समराइज करूं तो ग्रुप ए के अंदर है इंडिया, यूएसए, नामीबिया, नीदरलैंड एंड पाकिस्तान। ग्रुप बी करेक्ट। ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, जिम्बाब्वे, आयरलैंड, ओमान। ग्रुप सी इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, स्कॉटलैंड, इटली, नेपाल। ग्रुप ओके। डी साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, कनाडा एंड यूएई। तो इन चारों ग्रुप के कॉम्बिनेशन आई एम श्योर आपने भी देखे होंगे, स्टडी किए होंगे। तो इसके हिसाब करेक्ट। से चार लोग आपके कौन से बैठते हैं, चार टीमें कौन सी बैठती हैं सेमीफाइनल में? एक्चुअली हम उसको वैसे देखने से अगर मैं ये कहूँ राहुल तो एक्चुअली हमें इस टूर्नामेंट को सुपर 8 के नजरिए से ही देखना पड़ेगा। बिकॉज हम्म। अगर आप इसकी फॉर्मेट देखोगे तो इन हम्म। रियलिटी जो 20 टीमें फर्स्ट राउंड में खेल रही है, हम्म। उन टीमों में से द जनरल एक्सपेक्टेशन इज दैट कि आपके जो एसोसिएट नेशंस हैं, दैट इज नामीबिया, हम्म। इटली, हम्म। यूएई, हम्म। स्कॉटलैंड, ये सारे जो टीम्स हैं वो शायद बाहर हो हम्म। जाएंगे और देश के सबसे टॉप, वर्ल्ड के टॉप टॉप 8 टीम्स आगे जाएंगे। हम्म। इसमें ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये कंपटीशन में इन्होंने रूल्स ऐसा फ्रेम किया है कि जो पहले वाला जो पार्ट है, पार्ट 1, हम्म। उसकी हम्म। वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो है राहुल। बिकॉज जब आप हम्म। सुपर 8 में जाते हो तो आप पॉइंट्स कैरी फॉरवर्ड नहीं करते हो। दूसरी राइट। चीज, ऑलरेडी प्री सीडेड है वर्ल्ड कप के टीम्स। तो फॉर एग्जाम्पल हम्म। इंडिया इज नंबर 1, से ऑस्ट्रेलिया इज नंबर हम्म। 2 फॉर एग्जाम्पल, राइट? तो हम्म। ऑलरेडी प्री सीडेड है। तो इन हम्म। रियलिटी अगर आप देखोगे तो सुपर 8 की ग्रुप में, मैं इंडिया वाली ग्रुप बताता हूँ आपको, वो होगी अगर सारा चीज एक ही तरह से रहा कि अज्यूमिंग द सेम टीम्स दैट आर एक्सपेक्टेड टू गो थ्रू, India, हम्म। Australia, South Africa, and I think it will be I forgot the third team. India, Australia, South Africa है अपनी ग्रुप में, and I think there is a West Indies if I remember correctly. So हम्म। ये हमारी ग्रुपिंग होगी, okay? ओके। Now that is the group of death in that sense because you have India, हम्म। which is the best squad in the world currently from a T20 perspective, and we have Australia who are very competitive. Then you have South Africa who are probably the second best team in the world, and you have हम्म। West Indies who are always, like, can be a big team, right? हम्म। uh, हम्म। पाकिस्तान वाली ग्रुप में पाकिस्तान, अज्यूमिंग, न्यूजीलैंड है, इंग्लैंड है, एंड आई थिंक there is another team, and Sri Lanka, assuming the same 8 go through, right? So essentially that is a more easier group. So अगर आप मुझे हम्म। पूछोगे कि फर्स्ट राउंड में क्या होगा, ये आपकी सेकंड सवाल में आती है, वो इंडिया और पाकिस्तान वाली जो मैच है उसके ऊपर। बट इंपॉर्टेंटली इसमें ये कहूंगा कि अगर कोई सरप्राइज नहीं है तो इट विल बी अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, लाइक अ चांसेस दैट द 8 टीम्स विल कम थ्रू। बट मैं डेफिनेटली सरप्राइजेस एक्सपेक्ट करता हूँ, स्पेशली विद टीम्स लाइक वेस्ट इंडीज, जो I राइट। don't think have a chance that they will directly go through, because I don't think key teams like West Indies and a few other teams, that the associates will be pushovers, because
इतना याद रखिए राहुल, जैसा फॉर्मेट छोटा होते जाता है, जब आपकी यंगर टीम्स होते हैं वो उतने अच्छे परफॉर्म करते हैं। सही बात है, अगर आप नॉर्मली नोटिस करोगे कि टेस्ट क्रिकेट में अगर आपने आयरलैंड को डाला तो हो सकता है कि वो मैच 2 दिन में खत्म हो जाए या 1 दिन में खत्म हो जाए, बिकॉज उनको वो एक्सपोजर मिला नहीं है लॉन्ग फॉर्मेट खेलने के लिए। बट शॉर्टर फॉर्मेट में काफी एसोसिएट नेशंस के प्लेयर्स सारे लीग्स में खेलते हैं। तो अगर आप नोटिस करोगे तो फॉर यू कैन टेक लाइक IL T20 जो होता है, वहां पे ऑलमोस्ट सारे यूएई के प्लेयर्स खेलते हैं। सिमिलरली SA20 में नॉट जस्ट यूएई के, नॉट जस्ट साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स, देयर इज आल्सो प्लेयर्स फ्रॉम द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। सो हर टीम के पास वो एक्सपोजर है, वो एक्सपीरियंस है टू अपसेट अनदर टीम, और मोर इम्पोर्टेंटली बिकॉज द फॉर्मेट इज सो स्मॉल, any team can upset any team on the given day. So don't be surprised if the USA, does one up over Pakistan. They've already done it before, right? So, or USA does one up over a big team, or like Netherlands does something big over another team. So it's all possible. So मैं ये टूर्नामेंट को इस तरह से देखूंगा कि फर्स्ट राउंड में क्या है परफॉर्मेंसेस ऑफ द बिगर टीम्स, and how is it going to really matter in the second round, because the actual tournament starts from Super 8. To be honest, right. और नेपाल की टीम भी बहुत अच्छी है। Yeah, absolutely. नेपाल की टीम अच्छी है। नेदरलैंड्स में जो लोग खेलते हैं, they are all playing professional leagues. They have the exposure. UAE के पास IL T20 है, so they have the exposure. So ऐसा नहीं कि उन्होंने कभी एक बड़े स्टेज में खेला नहीं है या उन्होंने बड़े दिग्गज प्लेयरों के साथ खेला नहीं है, तो it's a fairly good tournament. But I don't agree with the way ICC runs this tournament, because honestly I don't think कि आप एक 20 टीमों की टीम लेके आओ और फिर ग्रुप्स बनाओ और फिर जब आप नेक्स्ट में जाते हो तो आपने ऑलरेडी प्री सीडिंग भी कर दिया. So it does not make sense. So just to give you as an example for people who don't know what this pre-seeding means, समझ लीजिए इंडिया, let's say Australia comes second in their group, okay? Just as an example, right? Let's say कि जो grouping में ऑस्ट्रेलिया है, उस ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है या वॉट एवर इट इज, एंड दे कम सेकंड इन द ग्रुप. बट जब वो सुपर 8 में जाएंगे तो वो सेकंड इन द ग्रुप नहीं होंगे, because they are already preceded, as an example. So the easiest example is Australia is one example. Similarly, you take any other big team, they are preceded. So agar if that big team qualifies, so if Australia qualified, they will qualify in whatever position they were when before the tournament started. So it is a very strange way of doing things. I think probably they have done this because it means that all the big teams will get the opportunity to play. I don't know. That's how you should conduct tournaments. I think tournaments should be conducted on the basis of performance on the day on that tournament, and not on the basis of your past performance. So बहुत ही यूनिक वे है. I mean, only ICC can explain, but मुझे लगता है कि possibly maybe to get the revenue out of it, because like bigger teams playing each other will earn a lot more money dollars. That could be the only reason why there is a pre-seeding. Absolutely. स्वरूप, अगर कोई इसमें pre-seeded तो और कोई associate nation अगर इसमें आता है तो वही होगा राहुल. So let's say, to give you an example, right? So let us say that West Indies does not qualify. Let's say West Indies loses majority of their games in the first round. और let's say West Indies जो भी ग्रुप में है, उस ग्रुप में अगर स्कॉटलैंड है फॉर एग्जांपल, राइट? सो अगर स्कॉटलैंड ने वेस्ट इंडीज को हराया और बाकी टीमों में से भी हराया, एंड दे गो थ्रू, दे विल जस्ट टेक द प्लेस ऑफ वेस्ट इंडीज इन द प्री सीडेड. तो अगर वेस्ट इंडीज की प्री सीडिंग है नंबर 6 एग्जांपल, राइट? और नंबर 6 आता है आपको नंबर वो वाली ग्रुप में जहां पे भी वो, लेट्स से इंडिया वाली ग्रुप में वेस्ट इंडीज है, राइट? So वो ग्रुप में वेस्ट इंडीज आर द लास्ट, because it's India, Pakistan, India, Australia and South Africa in the Super 8, which means they should either be 1, 2 and 3, right? By numbering sequence, right? So anyone who comes after that is going to be 4. So agar West Indies does not qualify and let's say Scotland qualifies in that group, then Scotland will just come and become number 4. Right. So in the same scenario, agar Australia doesn't qualify for whatever reason, then the qualifier will come up to that position. Exactly. और इस सुपर 8 से फिर जाएंगे सेमीफाइनल में 4 टीमें, और सेमीफाइनल से 2 टीमें फाइनल में. हाँ, सुपर 8 में 2 ग्रुपिंग्स हैं, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी. ग्रुप ए में 4 टीम होंगे, ग्रुप बी में 4 टीम होंगे. वो 4 टीम will play against each other. So for example, India will play against 3 teams. They will play, assuming the same teams go through, India will play Australia, South Africa and the West Indies. Okay. Which means what is going to happen is that इंडिया और ऑस्ट्रेलिया इस ग्रुप से क्वालिफाई नहीं कर सकता है.
rather what I'm trying to say is that India and Australia can qualify, but they will not play the semi-final. That's what I'm trying to say. ऐसा नहीं कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया नहीं क्वालिफाई कर सकता है. इंडिया और ऑस्ट्रेलिया गया तो साउथ अफ्रीका क्वालिफाई नहीं करेगा. इंडिया और साउथ अफ्रीका गया तो ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई नहीं करेगा फॉर द सेमीफाइनल. ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई नहीं करेगा. ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका ने क्वालिफाई किया तो इंडिया विल नॉट क्वालिफाई. सो जो स्टैंडर्ड आपको लगता है कि इट विल बी एन इंडिया ऑस्ट्रेलिया दैट विल जनरली कम इनटू द सेमीफाइनल्स एंड मे बी प्ले इन द सेमीफाइनल्स और दे विल बी इन द ग्रुप, इट्स नॉट गोइंग टू बी द केस बिकॉज़ इन दिस केस इंडिया इज प्लेस्ड इन द ग्रुप ऑफ डेथ as they can call it, because वो ग्रुप में आपके वर्ल्ड के सबसे 3 बेहतर टीमें हैं एक ही ग्रुप में, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका. And you add West Indies to it, who are a dangerous team, assuming they qualify, will mean that that group is very, very competitive. The other group, Pakistan है, New Zealand है, England है, and the fourth team would be Sri Lanka, right? That is a far easier group, which will boil down to your next question, right? So we can talk about the chances of each of these teams, so we can talk about it, but that is where it is. So एब्सोल्युटली. तो वही हम लोग इन सुपर 8 के दोनों ग्रुपों को देखें हैं, तो इसके हिसाब से आपको कौन सी दोनों टीमों में से 2 टीमें आगे जाते हुए दिखती है? मैं आपको एक स्टेप पीछे लेके जाता हूँ. इस सारे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा बेनिफिट पाकिस्तान को है. क्योंकि पाकिस्तान अपने सारे मैच एक ही जगह पे खेलेगा. अगर आपको याद होगा तो चैंपियंस ट्रॉफी में सब लोगों ने ये कहा था कि भाई इंडिया को एक अनफेयर एडवांटेज है, राइट? बिकॉज चैंपियंस ट्रॉफी की बाकी सारी टीमों को दुबई और पाकिस्तान 2 जगह पे ट्रैवल करना पड़ा, लेकिन इंडिया को सिर्फ दुबई में खेलना पड़ा. तो दे कैन इजीली स्ट्रक्चर देयर टीम विद द अजम्पशन कि हम दुबई में ही खेलेंगे तो मैं 3 स्पिनर लेके जाना चाहूंगा. लेकिन अगर आप वही टाइम अगर चैंपियंस ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया की टीम देखोगे तो दे हैव टू हैव अ मिक्स ऑफ टीम मेंबर्स, राइट? बिकॉज दे आर गोइंग टू बी प्लेइंग इन पाकिस्तान व्हिच विल प्रोवाइड देम अ डिफरेंट सेट ऑफ कंडीशन एंड दुबई व्हिच विल प्रोवाइड देम अ डिफरेंट सेट ऑफ कंडीशन. अब इस बार दैट एडवांटेज विल गो टू पाकिस्तान बिकॉज इंडिया विल प्ले इन इंडिया and Colombo when they have to play with Pakistan, and Pakistan will still play only in Colombo, right? Because they are going to be only in Sri Lanka. तो उन्होंने जो टीम स्ट्रक्चर किया है, that team is suited for that one particular location, right? Because अगर let's say Pakistan moves forward, they go to the semi-finals, and let's say they go to the finals also will still happen in Colombo because that is the agreement between the two squads, right? That, absolutely. That any India and Pakistan match happening will happen in a neutral territory, will not happen within India or will not happen within Pakistan, right? So in that scenario, now Pakistan has got the advantage. In reality, all those location advantage उनको मिल जाएगा. They have the location advantage. They have a preset team advantage because the team that they have picked is based on that particular location. And Colombo के अगर general pitches आप देखोगे तो they are generally slow, low kind of pitches. They are not the same fast kind of pitches that you see in India जहाँ पे आपको 200, 250 बन जाते हैं. It's not going to be those kind of pitches. Those pitches may not be as run fest as you see there. That means पाकिस्तान ने जो स्क्वाड पिक किया है वो स्क्वाड इज वेरी वेरी suited to that particular condition, so they will start with an advantage which other teams will not have, and we should not be upset about it because let's be very clear, you had the same advantage in the Champions Trophy. At that time Pakistan had to travel to Dubai and come back to Pakistan, right? So the advantage is not wrong in that sense between India and Pakistan, but it is absolutely unfair to all other teams. It does not matter whether it is Champions League or it's World Cup or any other thing. It is unfair to all other teams that they have to travel to 2 different places, but one among India and Pakistan will only sit at one place. Right. सरो इसमें अगर आपने अभी रिसेंटली जो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की T20 सीरीज हुई थी जिससे तीनों मैच पाकिस्तान ने जीते, उससे अगर देखा हो तो एक पाकिस्तान के स्पिनर हैं, उनके ऊपर बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है उनके एक्शन को लेके. वो एकदम राइट. सो हैव यू लुक्ड एट हिज एक्शन क्लोजली? आपने देखा? मैं यही नो राहुल, आई हैव नॉट सीन दोस गेम्स बिकॉज़ वो गेम्स देखने का मौका नहीं मिला मुझे. बट ऑनेस्टली स्पीकिंग माय व्यू इज वेरी सिंपल. ये मैं मुरलीधरन जब एक्शन को डाउट किया गया था, मेरा व्यू यही रहा है. आप के पास एक पर्टिकुलर एजेंसी है आईसीसी में, राइट, विच लुक्स एट बॉलिंग एक्शन एंड देन मेक्स अ डिसीजन कि वो बॉलिंग एक्शन लीगल है या इलीगल है, राइट?
हम ये कॉमेडी हर बार बुमराह के एक्शन में भी सुनते हैं, हमने हरभजन के एक्शन में भी ये सुना था, राइट? हमने ऑब्वियसली मुरलीधरन वाज द मोस्ट पॉपुलर ऑफ द कैंडिडेट्स। जब भी आप मलिंगा को बॉल डालते हुए देखते हो या मतीशा पतिराना को देखते हो तो आपको लगता है कि वो फेंकते हैं, राइट? दिस इज जस्ट पीपल्स परसेप्शन। नाउ लेट्स बी वेरी क्लियर, उस्मान तारिक, if I got the name correct, apologies if I got the name wrong, उनकी एक्शन has been cleared. There is absolutely no pending case running for him at this point of time. Now, taking that into face value, if there is no pending report, तो वो सीरीज में भी कोई अंपायर ने उनको रिपोर्ट नहीं किया, so the umpires are free to report. Okay, so even if the bowler has been cleared of his action, so for example सुनील नारायण के केस में जब भी उनकी एक्शन क्लियर हुई और जब वो खेलने आए तो he was reported by the on field umpire, which means his action will again go for review. That's how the ICC system works. Nothing stops the umpire from reporting. So I don't agree with the fact that, you know, like as a player you can obviously share your views that, you know, like, oh, it looks difficult to do, but you have to accept the official ICC methodology that has been done. जब तक उस्मान तारिक की एक्शन आईसीसी की तरफ से रिपोर्ट नहीं किया जाता है, I don't go by the fact that हमें उसकी एक्शन देख के ऐसा लगता है कि वो शायद थ्रो करते हैं। Now, वो हर नजरिए पे होती है, राइट राहुल? आपकी नजरिए में हो सकता है कि आपको लगता है कि वो थ्रो है, लेकिन आप क्रिकेट के कोई बायोमैकेनिक एक्सपर्ट तो नहीं हो, मैं भी नहीं हूँ, मैं नहीं बता सकता हूँ कि एंगल 15 डिग्री टर्न होता है कि 14 डिग्री टर्न होता है। तो I personally don't like to, you know, like go on, you know, like news reports. I also heard that Cameron Green showed some sort of a gesture, and they assumed that वो gesture वो उनके एक्शन के लिए था. None of us know. He hasn't spoken about it. Nobody knows. But if it was anything to do with that, then I don't think Cameron Green or anyone has the right to question the action, because ये हमने मुरलीधरन के टाइम पे भी देखा था, right? We remember what happened with मुरलीधरन when he went to Australia, and, you know, like there was, you know, like such a thing that almost became a diplomatic issue, right? Absolutely. It became an issue between Sri Lanka and Australia in that sense, you know, like for a cricket game. So मैं यही कहूँगा कि as players and even as officials, you need to look at it absolutely neutrally. We need not worry about, अगर उनकी एक्शन आईसीसी की तरफ से क्लियर है, तो there is no right for any player to question कि उनकी एक्शन लीगल है कि नहीं. आपकी पर्सनल व्यू कुछ भी हो सकती है, आपको लगता होगा कि भाई वो थ्रो करते हैं, that is absolutely okay, there is nothing stopping you from having that view. But अगर आईसीसी बोलता है कि नहीं उनकी एक्शन लीगल है, तो लीगल है. The only other person who can report that action is not legal is the on-field umpire. I can't remember any on-field umpire has reported his action as of now, so that means his action is absolutely okay. He will play wherever he has to play, and if you can't, I mean, if you can't play a bowler, do not say that उनकी एक्शन में ही प्रॉब्लम है करके, right? If you can't figure out how to play Matisha Patirana, it does not mean कि वो थ्रो करते हैं. Let ICC come out and say कि नहीं Matisha Patirana के एक्शन थ्रो है करके, but they have not. So you got to learn to play. You cannot complain कि यार उनकी एक्शन ना थोड़ी odd लगती है मुझे, ठीक है? तो that's okay. Everybody has got different bodies, different structures. Absolutely. फिर थोड़ा सा हम लोग आगे की तरफ चलते हैं. हम लोगों ने थोड़ा सा ये आपने बड़ा अच्छा समझाया ना कि टॉप 8 का कॉन्सेप्ट क्या है, फिर वहां से सेमीफाइनल कैसा कंपोज हो सकता है. वो चीजें आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगी कि टॉप 8 जो है वो सुपर 8 जिसे हम लोग कह रहे हैं वो किस तरीके से कंपोज होगा. इसके अंदर अब एक बड़ी पूरे वर्ल्ड कप को लेके, भारत पाकिस्तान के मैच को लेके एक बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है, एक इशू क्रिएट किया जा रहा है, पॉलिटिकल एंगल भी इसके अंदर है काफी सारा. हम लोगों ने पिछले एक हफ्ते में और स्पेशली 3-4 दिनों में जो डेवलपमेंट हुई वो सब हम लोगों ने देखे. ऑफ कोर्स उससे रिलेटेड सब लोगों ने अपने अपने एनालिसिस शेयर किए और एक्सपर्ट्स ने अपने व्यूज शेयर किए, विच इज फाइन. पर ये बात तो काफी हद तक क्लियर थी कि कुछ न कुछ जैसा चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर भारत पाकिस्तान के मैच को लेके हुआ था वैसा वर्ल्ड कप में भी कुछ न कुछ होगा. तो आईसीसी ने पहले ही एक न्यूट्रल वेन्यू और वो सारी चीजें अरेंजमेंट करके रखी थी. अब जब ये बांग्लादेश वाला इशू सामने आया और बांग्लादेश को आईसीसी ने बाहर किया, तो उस वक्त इनडायरेक्टली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो अभी चेयरमैन है मोहसिन नकवी, जो कि वहाँ के होम मिनिस्टर भी है, इंटीरियर मिनिस्टर भी है, उन्होंने भी इनडायरेक्टली एक धमकी दे दी थी कि 21 टीमें बुला ली है तो 22वीं टीम बुला. दैट मीन्स
they can take their name back from the वर्ल्ड कप। एक ही इनडायरेक्ट मैसेज उन्होंने आईसीसी को दे दिया था। अब उन्होंने गवर्नमेंट की तरफ से ये इन्फॉर्म करवाया है वर्ल्ड को। आई एम नॉट श्योर ये ऑफिशियली पीसीबी की तरफ से आईसीसी को गया है या नहीं गया है। नो, नहीं गया है। राइट, कि पाकिस्तान जो है वो 15 तारीख को भारत के अगेंस्ट फील्ड पर नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान गवर्नमेंट हैज अलाउड और क्लियर्ड द पाकिस्तान क्रिकेट टीम टू पार्टिसिपेट इन द वर्ल्ड कप, but they will not take field on 15th of February मैच अगेंस्ट इंडिया। ये वर्ड और शब्दों का कॉम्बिनेशन भी बड़ा नपातुला यूज किया गया है उस ट्वीट के अंदर, जिसके अंदर ये लिखा गया है। बड़ा ही डिप्लोमेटिकली और पॉलिटिकली करेक्ट फ्रेम इसको किया गया है। सो व्हाट डू यू थिंक कि यहाँ से क्या वाकई, क्योंकि आईसीसी ने भी जो उसके बाद प्रेस रिलीज जारी करी है, वो भी आई एम श्योर आपने देखा होगा कि वो भी बड़ी नपी तुली प्रेस रिलीज जारी करी है। उन्होंने एक तरफ तो पाकिस्तान को पोलाइटली कहा भी है कि भाई आप कंसिडर करें अपना डिसीजन, और दूसरी तरफ उसी प्रेस रिलीज के अंदर उनको एक पोलाइट धमकी भी दे दी है कि इसके बाद क्या होगा। तो इन सब चीजों को देखते हुए व्हाट्स योर व्यू कि क्या किस तरफ ये ऊट बैठेगा? There is a good chance the game will actually go through, Rahul. It can happen. The reason ये सब इतने न्यूआंस स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और इसके बाद इतना ज़्यादा चर्चा भी नहीं हो रहा है, is because there are back channel talks going on, backroom talks going on to see if we can have this game. Because मैं यही कहूँगा कि firstly let's look at the issue, right? बहुत लोगों ने कहा था कि 1996 में ऑस्ट्रेलिया, आई थिंक इट वाज, हु बॉयकॉटेड गोइंग टू अ पर्टिकुलर कंट्री, ऑस्ट्रेलिया एंड वेस्ट इंडीज, राइट? वेस्ट इंडीज था, राइट? आई रिमेंबर देयर वर टू कंट्रीज हु बॉयकॉटेड। फिर आई थिंक कोई और साल था 2003 या सम ईयर जहां पे आई थिंक इंग्लैंड और somebody said we will not go to Zimbabwe, right? And they didn't play the game. तो a lot of people have asked कि वैसे ही तो पाकिस्तान ने बताया करके ना, there is a big difference. First and foremost, वो दोनों सिनेरियो में दोनों कंट्रीज की अग्रीमेंट थी, in the sense what I mean to say is that there was a very clear message that we don't want to go to that particular country. So what I mean here is Australia said we will not come to, I think, Sri Lanka, if I remember correctly, right, in 1996, right, because of security concerns. But ये सिनेरियो वैसे नहीं है। यहाँ पे पाकिस्तान is going to Sri Lanka, they are playing all their games in Sri Lanka, तो security issue नहीं है वहाँ पे, right? So it is not comparable to that 1996 वाली सिनेरियो या जो 2003 वाली सिनेरियो जहाँ पे इंग्लैंड ने कहा था कि यार we don't have any diplomatic ties with Zimbabwe, which means that we cannot send our team to Zimbabwe because of reasons not cricket but political, right? But that the scenario was not कि England didn't play Zimbabwe in Zimbabwe but they played, say, South Africa in Zimbabwe. That is not the scenario, right? It's not like Australia didn't play Sri Lanka in Sri Lanka but decided to go to Sri Lanka and play India. That was not the scenario. So first of all, ये scenario same नहीं है, right? दूसरी चीज, जब 96 में हुआ था या 2003 में हुआ था, दोनों सिनेरियो में it was a decision taken by the host board, right? That we will not go and play. ये सिनेरियो में आईसीसी ने ऑलरेडी प्री एग्रीमेंट एक करके रखा है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो भी मैचेस होंगे वो एक न्यूट्रल वेन्यू में होगा, right? So just like the Champions Trophy, जब India didn't travel and Pakistan came to Dubai to play, India is traveling to Colombo to play Pakistan, and Pakistan are not traveling anywhere, they are playing in Colombo. तो ये ऑलरेडी एक प्रीसेट एग्रीमेंट है। तीसरी बात, जब तक बांग्लादेश की वाली इशू नहीं आई थी, किसी ने सिक्योरिटी के बारे में नहीं कहा, ना बांग्लादेश ने सिक्योरिटी कंसर्न्स लिखा ले, ना पाकिस्तान ने कहा कि हम इंडिया के अगेंस्ट नहीं खेलेंगे, राइट? तो ये तीनों सिनेरियो में डेफिनेटली इट इज a decision that has been taken because of whatever has happened at that particular time, right? जब Bangladesh was removed from the World Cup for whatever reason, it's a decision that has been taken on the basis of that thing, right? Whatever that event happened and they have decided. So it is not a security concern, it is not a concern कि हम इंडिया के खिलाफ नहीं खेलेंगे, because अगर इंडिया के खिलाफ आप नहीं खेलोगे तो आपने अभी 2 या 3 महीने पहले चैंपियंस ट्रॉफी में खेला था, तो तभी तो आपने खेला था, यू प्लेड इंडिया। नो, मेरी यही सवाल होगी उनको, ठीक है, आपने डिसाइड किया, दिस इज द गवर्नमेंट दैट हैज आस्क्ड देम टू डू इट, ओके फाइन,
ओके आपने इंडिया के साथ नहीं खेला 15 तारीख वाली मैच, ग्रेट. What happens if India and Pakistan are both playing the knockout game? तो आप ये कहोगे कि आप नॉकआउट गेम फोरफिट कर दोगे. कल मान लीजिएगा इंडिया इज इन ग्रुप ए इन द सुपर 8, पाकिस्तान इज इन ग्रुप बी आई थिंक ऑफ सुपर 8, राइट. तो हो सकता है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की सेमीफाइनल हो, राइट. पाकिस्तान क्वालिफाई फ्रॉम देयर ग्रुप, इंडिया क्वालिफाई फ्रॉम देयर ग्रुप, India is say let's say 1, Pakistan is 2 in that group, whatever that is, India play Pakistan in a semi-final, or let us say that India and Pakistan make it to the final. तब आप क्या करोगे? आप वही व्यू लोगे कि नहीं हमने इंडिया को 15 तारीख को नहीं खेला था फॉर वॉट एवर रीजन, तो हम फाइनल भी नहीं खेलेंगे, वी विल गिफ्ट द टूर्नामेंट टू इंडिया, या हम सेमीफाइनल को फोरफिट कर देंगे. अगर आपको याद है तो लेजेंड्स वाली गेम में आई थिंक इंडिया ने अपनी सेमीफाइनल में कुछ तो फोरफिट कर दिया था, राइट. पाकिस्तान क्वालिफाइड फॉर द फाइनल बाय डिफॉल्ट बिकॉज इंडिया डिडंट प्ले दैट लेजेंड्स वाली गेम. That means are we saying that Pakistan is going to take the decision and say okay fine we will not play if it's a semi-final, or if you play the semi-final then what are you saying to say कि भाई ये रीजन उन्होंने इसके लिए 15 तारीख की मैच बोला है, ये मैं आपको पहले वाले पॉइंट में लेके जाऊंगा. बिकॉज ये जो टूर्नामेंट है इसमें उन्होंने इस तरह की रूल्स रखे हैं कि वो जो फर्स्ट वाली मैचेस हैं उसकी कोई भी इम्पैक्ट सुपर 8 के लिए नहीं होगा. दैट्स व्हाई व्हेन वी स्टार्टेड दिस टॉपिक आई टोल्ड यू अबाउट दैट, बिकॉज when you come to this topic you will understand why it has been done. अगर मैं 15 तारीख वाली मैच नहीं खेलूंगा तो पाकिस्तान को टेक्निकली पॉइंट्स में कोई इंपैक्ट नहीं होगा. उनकी अगर वो क्वालिफाई कर गए स्टैंडिंग में कोई इंपैक्ट नहीं होगा, सुपर 8 की स्टैंडिंग में भी फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज दे आर प्री सीडेड लाइक आई टोल्ड यू, राइट. सो प्री सीडेड में जो भी पाकिस्तान की सीडिंग थी, राइट, उस सीडिंग के बेसिस पे वो जाएंगे अंदर. तो it is a decision which Pakistan knows that it will not have an impact on their tournament. But here is a catch. कोलंबो में काफी बारिश है, राइट. तो ले लीजिए कि आप नेदरलैंड्स के खिलाफ आपकी मैच है, वो गेम रेन्ड आउट हो गई और आपने बता दिया कि हम इंडिया के खिलाफ नहीं खेलेंगे. तो यू आर प्लेइंग, देयर आर 5 टीम्स इन एवरी ग्रुप, मतलब आपके पास 4 गेम है खेलने के लिए. So the assumption here is that if इंडिया के गेम नहीं होने वाला है तो आपकी तो 2 पॉइंट चली गई वहां पे, राइट. तो आपके पास बचते कितने हैं? 3 गेम्स. आपको तीनों गेम को जीतना पड़ेगा सो दैट यू विल बी इन दैट बेस्ट पोजीशन टू क्वालिफाई फ्रॉम दैट ग्रुप, राइट. अगर आपकी 2 मैच रेन आउट हो गई, या समझ लीजिए कि 1 मैच रेन आउट हो गया और हो सकता है कि 1 मैच बहुत ही शॉर्टेंड गेम हो गया, राइट, और उस शॉर्टन गेम में आप हार गए एसोसिएट नेशन के साथ. इट्स पॉसिबल. पाकिस्तान हैज लॉस्ट टू एसोसिएट नेशंस, अदर टीम्स हैव लॉस्ट टू एसोसिएट नेशंस. लेट्स नॉट फॉरगेट बहुत साल पहले इंडिया हैड लॉस्ट टू बांग्लादेश बिफोर बांग्लादेश हैड बिकम अ वेरी बिग टूर्नामेंट, राइट. देयर आर प्रेसिडेंट्स फॉर पीपल लूजिंग. इंग्लैंड हैव लॉस्ट, देयर आर अदर टीम्स दैट हैव लॉस्ट टू एसोसिएट नेशंस, राइट. तो ये सिनेरियो में पाकिस्तान हैव पुट देमसेल्फ इन अ बाइंडिंग सिचुएशन जहां पे आपकी कोई भी गेम रेन आउट हो गई, या आप वर्स्ट केस यू लूज टू वन ऑफ द एसोसिएट नेशंस, the chances of your qualifications become lesser and lesser because आपने already एक गेम कम कर दिया उसमें से. So in reality, whether the decision will benefit Pakistan or not, they will have to hope, and they have to hope that all their remaining 3 games happen properly, without any delays, without any other issues, and they don't end up on the wrong side of a day. Because let's say you play the Netherlands. Netherlands is a very good team. It's not a bad team. हो सकता है कि वो दिन में नेदरलैंड्स के सारे तारे एक ही जगह पे मिले, जैसे आयरलैंड का हुआ था एक बार 2000, यू रिमेंबर, राइट. इंडिया इन द 2007 वाली वर्ल्ड कप में, राइट, नोबडी एक्सपेक्टेड कि इंडिया विल लूज टू अ टीम एंड दे लॉस्ट टू श्रीलंका और समथिंग लाइक दैट, एंड दे वर नॉट क्वालिफाइंग, राइट. सो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आप एक एसोसिएट नेशन के साथ हार दो, जैसे पाकिस्तान के साथ लास्ट टूर्नामेंट में हुआ था, राइट. लास्ट टाइम की जो T20 जिम्बाब्वे के साथ भी हार गए थे और यूएसए के साथ भी हार गए थे, right. They lost to USA, right. When they lost to USA, and then they lost to India as well, their chances of qualification became very very less because अब आपके पास वो मौका ही नहीं है. तो it's the same scenario for Pakistan, right. In technicality they have lost to India because आपने मैच नहीं खेला है, right. Assume कर लेते हैं कि मैच नहीं खेलते हैं वो, so that means you have lost 2 points irrespective of the result. That means you are already -2 when you start the tournament. If you lose to one of the associate nations, then you are gone because now you have only 2 games. And the other team has got 3 games. So Netherlands, if they defeat Pakistan, they have 1 extra game in hand. Now वही हो सकता है कि नेदरलैंड्स और श्रीलंका वाली गेम रेंड आउट हो गई,
Now Netherlands will get 1 point, Sri Lanka will get 1 point, which means Pakistan के पास और भी qualification के लिए chances कम हो जाते हैं. So in short, forgetting all the financial implications and other things that can happen, which we can talk about, it is a loss for Pakistan as a team, and which is not good for them, because Absolutely. It is not beneficial for them to skip the game. आप ये बोल सकते हैं कि हो सकता है कि वो मैच में पाकिस्तान हार जाएगा, but that's a complete different scenario. आप ये नहीं सोच सकते कि मैच में जाने के पहले कि आप हारोगे कि जीतोगे. Exactly. बट आप तो पहले बता रहे हो कि मैं नहीं खेलूंगा, तो आपके पास तो वैसे ही -2 पे चल रहे हो ना. पाकिस्तान इज लाइक -2 व्हेन दे स्टार्ट दिस टूर्नामेंट. अच्छा अनूप, इसमें ना एक और चीज है, जैसे आपने कहा कि बैकडोर डिप्लोमेसी या बैकडोर टॉक्स भी कहीं ना कहीं चल रहे हैं. तो आई एम श्योर हम लोगों ने भी इसके पहले कौन सा टूर्नामेंट हुआ था उसमें भी ये चीज देखी थी कि पाकिस्तान की टीम होटल में रुकी हुई थी. फिर ये खबर आई कि नहीं वो होटल में से निकल रहे हैं, फिर थोड़ा मैच स्टार्ट होने में देरी हुई, तो अल्टीमेटली वो मैच हो गया, राइट. वैसे ही कुछ अभी जो इतना 10-15 दिन का समय है, इसके दौरान भी कुछ शायद मान मनोबल की जाए, मनुहार की जाए, फिर मान जाए, correct, ईगो सैटिस्फाई किया जाए कहीं ना कहीं एक दूसरे का. That's what is going to happen, because there are lots of implications of this decision, Rahul. पहले तो financially it is a major loss, right? Because firstly, let's be very clear, barring India and to a certain extent Australia, a lot of the teams that play the cricket World Cup and cricket में जो ecosystem में है, they are dependent on ICC for funds. ICC को फंड कहां से आता है? आईसीसी को फंड आता है जब ये टूर्नामेंट होता है, राइट. इस टूर्नामेंट की गेट से उनको पैसा मिलता है. इस टूर्नामेंट की ब्रॉडकास्टिंग राइट जो उन्होंने बेचा है टू हूएवर, फॉर इंडिया में जियो स्टार है, वर्ल्ड वाइड यू हैव सोल्ड इट टू प्राइम, राइट. एनीवेयर इन द वर्ल्ड यू विल वॉच इट ओनली ऑन प्राइम. देयर इज नो अदर प्लेस यू कैन वॉच द वर्ल्ड कप, राइट. देयर इज नो अदर प्लेस, यू कैन ओनली वॉच इट ऑन प्राइम वीडियो, राइट. So the whole tournament has been sold on the basis of India versus Pakistan. Let's be very clear. Now you don't have Bangladesh, right? Which means सबसे ज्यादा व्यूअरशिप 3 जगह से आती है, इंडिया, उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद बांग्लादेश. These 3 countries contribute maybe 85 to 90% of the viewership, right? बाकी के 10% या maybe 80% of the viewership. बाकी के 20% में से ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड might be contributing 10 to 11% of the viewership, and New Zealand and other countries will form 5 to 6% of the viewership. तो ऑलरेडी आपने 80% में से 10-15% तो निकाल ही दिया, बिकॉज बांग्लादेश इज नॉट प्लेइंग द वर्ल्ड कप, राइट. एंड इट्स नॉट गोइंग टू बी टेलीकास्ट इन बांग्लादेश, राइट. इट्स वेरी क्लियर, इट्स नॉट गोइंग टू बी टेलीकास्ट इन बांग्लादेश, व्हिच मींस आपकी वहां की रेवेन्यू चली गई ऑलरेडी. नाउ यू आर सेइंग कि इंडिया और पाकिस्तान के मैच नहीं होगा, ओके. दैट मींस द मनी दैट्स गोइंग टू कम टू आईसीसी इज गोइंग टू बी लॉट लेसर, व्हिच मींस लॉट लेस फंड्स विल गो इनटू द गेम, which is not going to help any of the associate nations. It's not going to help Pakistan. It's not going to help any other country that is dependent on ICC for funds, right? This is one side of the divide. हो सकता है कि जब जियो हॉटस्टार, again I'm sure the contract is framed in such a way कि अभी तो जियो हॉटस्टार शायद कुछ कर नहीं पाएंगे, but already there will be pressure from the broadcasters, including Prime Video on ICC, saying this is a big loss for us, because you know, like, the amount of ad revenue you get out of an India Pakistan की जो slot होती है is very different when another team plays India, or you know, other teams play. 40 lakh Indian rupees for 10 seconds. Correct. So now you think of it. Now from Jio Hotstar's perspective, this is a big loss. It's a big loss for Prime. I'm sure Prime is also selling similar slots, right? तो ये सिनारियो में there will be pressure from the broadcaster. दूसरा क्या हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम जब ब्रॉडकास्टिंग के लिए डिस्कशन होगा, तो इट्स क्वाइट पॉसिबल दैट anybody who is negotiating will put a clause which will say कि अगर main marquee matches between India Pakistan या India Australia नहीं होता है in a world tournament, then you have to pay much less money, right? Now this might be negotiated in the contract. This is the third issue. The fourth issue is आपने क्रिकेट को ओलंपिक्स में 2028 में आप खेलने वाले हो, in the Olympics that's going to happen in the America, right? अमेरिका में जो यूएसए में होने वाली है, उसके लिए आपने क्रिकेट को एक्सपोर्ट डाला है. Can you do the same jugglery when you go to the Olympics? The Olympics might not accept you at all. So you are putting a lot of things. ये एक one match नहीं है, Rahul. This is not a match between India versus Pakistan that can get cancelled. This has implications to how cricket is run, how cricket is perceived as a sport when it has to go to other countries.
So iski issue is not a India versus Pakistan political problem, or it's not an India versus Pakistan cricket board problem. This is a major problem. So if India and Pakistan ki games nahi hoti hai, so revenue nahi aayegi. What are we saying about the future? Tomorrow there'll be another tournament where India and Pakistan might be part of it, right? Are we saying ki any future tournament India will not play Pakistan and Pakistan will not play India? Now that is a very big decision, right? Because that has implications. So I hope, as a cricket fan, forgetting all other things, we are all cricket fans, right? We are all cricket enthusiasts. We are not here talking about India or Pakistan. We are not politicians. We are not talking about politics. We are here to talk about cricket. Definitely that game has to go through. It does not matter what. I hope the ICC and PCB and BCCI and the Pakistan government and the Indian government work out a way to ensure that this game goes through and there are future matches at least in neutral venues. I totally understand bilateral series. That is purely dependent on political situation. We understand that. I mean, you want to keep sport out of all politics, but in reality, it doesn't happen like that. So that is completely different. But multi-nation tournaments, you cannot say that I will not play A squad or B squad. Or you cannot say that because I don't like to play that squad in that particular country, make some arrangement so that I can play in another country. Because you are making it difficult for other people. The other countries are at a disadvantage when you make an arrangement like how ICC has done now. So all in all, I hope that this gets resolved and we do have an India-Pakistan game. I am hopeful that it will be India-Pakistan on the 15th and it's not going to get cancelled. इसी से कनेक्टिंग एक और चीज, मान लीजिए अगर ये चीज नहीं होती है, अगर गेम नहीं हो पाता है, तो इसके इम्प्लीकेशन पाकिस्तान क्रिकेट पे कितने ज्यादा हो सकते हैं? क्योंकि अगर मैं देखूं कि 2009 के बाद में जब श्रीलंकन टीम पे अटैक हुआ था, ऑलमोस्ट 10-11 साल पाकिस्तान में कोई क्रिकेट नहीं हुई, इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हुई। आज के समय में जो पाकिस्तान की टीम में है, लगभग वही लोग उस समय टीनेज में रहे होंगे, अपनी क्रिकेट की शुरुआत कर रहे होंगे। मतलब उन लोगों ने अपना जो क्रिकेटिंग सफर है वो पाकिस्तान में बिना इंटरनेशनल क्रिकेट होते हुए देखा। And that is the impact you are seeing, Rahul. The Pakistan team is not doing great is because of the fact that there are other issues that we all know. But definitely that fact that there was no cricket between 2009 to whatever years, 10 to 11 years, has had an impact on the next generation of cricketers who played for Pakistan. They are not at the same level as Imran Khan or Wasim Akram or Aqib Javed, the people that we know, right? Because there has been no cricket. Their stadiums have gone for a toss. If you see a lot of their stadiums, they all went for a toss because there was no cricket except local cricket. So there are big implications if this game doesn't go through, and let's say that the boycott happens, because then it's quite possible that the ICC might take some serious action, because they might say we will now put our foot down, right? Then what happens in that scenario? Like the cricket world has already got only 10 countries playing, right? इसमें से already Zimbabwe political issue की वजह से hardly खेलता है, right? Political whatever other issues. South Africa usually play mostly, like very less test cricket. They play mostly, like white ball cricket only. Due to funding and other related issues, we see a lot less test cricket. अभी बांग्लादेश के खिलाफ भी तू मैं हो गया. अब आप बोलते हो कि पाकिस्तान के साथ भी तू मैं हो गया, तो बचता कौन है भाई खेलने के लिए? क्या सिर्फ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड और न्यूजीलैंड ही 4 टीम बचे हैं क्या कि उनके बीच में खेलते रहेंगे क्या? So it has big implications if this issue is not resolved in a proper fashion, not just for now, but for future. You are looking at probably cricket going out as a sport to be considered by other countries. Right. Because you are not anyway helping the associate nations. They're only playing in tournaments like this. You are not getting them aboard. And now you have a problem with almost 3 major Asian teams. Not only this, now what happens to ACC, Asian Cricket Council? Asian Cricket Council में mainly 4 team है, India, Pakistan, Bangladesh, Afghanistan. There are other associate nations, but these are the 4 main teams. उसमें से तो already India, Pakistan और बांग्लादेश की झगड़े चल रही है अभी. तो बचता क्या है? सिर्फ इंडिया और अफगानिस्तान खेलेंगे या पाकिस्तान और अफगानिस्तान खेलेंगे क्या? फिर I'm just asking, what will be Asia Cup in some time? There might be no more ACC. That's not good for cricket, Rahul. अगर मैं आपको 2 मिनट और लूं तो मैं आपको ये बताऊं, बहुत साल पहले जब इंडिया, Pakistan or Sri Lanka, India and all, they were not at the top of the ICC's
money chunk. There used to be always this complaint कि England और Australia की जो boards हैं, they run the show, right? तभी Jagmohan Dalmia, if I remember correctly, formed the concept of where the Asian countries came together and positioned themselves as one unit, and that's how you were able to get a lot of things done at ICC, because always the Asian bloc used to be together, which means that other countries had to listen to them. Now it might happen that India might go into it might be harmful for India as well, because हो सकता है कि now Pakistan and Bangladesh might join hands in any of the next ICC meetings. It might be always possible that two countries are joining hands. Now it's quite possible that a third country might also join, saying that अरे यहाँ पे कहाँ पे unity है, why don't you go and join this? Now that will have implications for India as well. We all forget कि इसमें अगर आपको लगता है कि इंडिया के इसमें कोई भी लॉस नहीं है, like we have IPL, we have lots of tournaments. Let's be very clear. All of this happens because you get in the moolah. And a lot of the moolah comes from India versus Pakistan games as well. IPL earns you a lot of money, but it does not mean that the next broadcaster is going to say कि सिर्फ IPL में मैं आपको सारा पैसा लेके दे दूंगा, तो they are going to be happy. No. It has implications for India. It has implications, much bigger implications for Pakistan, much bigger implications from a world cricket perspective. It has implications on ICC. It has implications on ACC. So it is just not about one India versus Pakistan game not happening on the 15th. You got to take into account every other implication. So hopefully better sense prevails, I will say. I will just say that better sense prevails and there is a solution that is found, and a permanent solution, so that next time when the tournament happens, there is no question whether India and Pakistan will play. Either we make a decision that India and Pakistan will not play, or India and Pakistan will play with whatever agreed rules and regulations, and no government can come in between, be it from India or Pakistan, and say that no, you can't do it. Until there is a very expensive scenario, like war chal rahi hai to ho sakta hai. But if in peacetime, it's peace at this point of time, there is no ongoing ready war. So on peace times, there is a clear agreement. Right. अनूप, अब हम लोग भारत के कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, जो प्लेइंग 11 की बात करें. अभी जो रिसेंटली जो सीरीज कंक्लूड हुई, उसके अंदर हम लोगों ने देखा कि आखिरी मैच में चूंकि संजू वो 5 मैचेस खेले और 5 मैचेस में वो रन नहीं बना पाए. ऑफ कोर्स वो 5 मैच ईशान भी खेले, ईशान 5 में से 4 मैच खेले और उन्होंने बड़ी अच्छी उन्होंने परफॉर्मेंस दी. करेक्ट. फिर आखिरी मैच में संजू की जगह ईशान किशन विकेट कीपिंग करते हुए दिखे, तो एक ये कहीं ना कहीं सिग्नल देने की कोशिश की गई कि जो वर्ल्ड कप है उस वर्ल्ड कप में संजू की जगह ईशान को प्रायोरिटी मिलेगी. तो ऑलमोस्ट looks like it's done, because अगर आपने वार्म अप मैच देखा होगा तो it was very clear. I think the question was asked, as far as I know, to Surya Kumar Yadav, and obviously the question was to the match, so maybe his answer was for the match, but it was very clear that like the chances of Sanju Samson opening are less. Is that the correct call? I would have said I don't think it's a bad call from form perspective, but अगर आप फॉर्म को ही रखोगे राहुल, तो मेरा यही सवाल है कि you have to be consistent. Surya Kumar Yadav was out of form for almost 1.5 years. You didn't drop him. Sanju Samson was in absolutely wonderful form when you decided to drop him so that you can accommodate Shubman Gill. That was not Sanju's fault. Now then you told him play at number 5. You shunted him up and down the order. And obviously the first time he's had an issue, you probably are dropping him because you need to fit in the more form player, right? So if you look at it, it's very unfair for Sanju Samson. But it is Sanju Samson who has got this on himself because he was given the opportunity. आप एक ऐसे टीम के लिए खेलते हो जहां पे लाइन लगी है. जो 11 खिलाड़ी अब वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, मैं आपको यकीन लिख के देता हूं कि अगर आप उस 11 खिलाड़ी को निकाल के इंडिया के करंट डोमेस्टिक सेटअप से और 11 खिलाड़ी डालोगे तो भी वो टीम उतनी ही कॉम्पिटिटिव होगी T20 फॉर्मेट में, राइट? अगर आपने ओपनर को यशस्वी जायसवाल को डाला या आपने प्रियांश आर्या को डाला तो भी वो टीम उतना ही कॉम्पिटिटिव होगा. So it is unfortunate for Sanju Samson कि there's a good chance that he might not take the field. But let's be very clear, he has put it upon himself on this one. He has been given the opportunity in 5 games, and at no point was he dropped in those 5 games.
he did not perform in those 5 games. And luck, ab jo bhi keh lo, it is so happened that Ishan Kishan performed in almost all those games, and Tilak Verma, when he comes back, somebody has to drop. Who is the somebody? In current squad, the only person you can drop on form is Sanju Samson. So there's a good chance that Sanju will not take the field, which according to me is not great for Sanju Samson, because I think if he does not get the opportunity now, the chances of him getting any sort of opportunity in the future is lesser and lesser, because you cannot keep on getting chances and not making use of those chances. Unfortunately, the way Indian cricket is structured, if you can't make use of your opportunity at the first attempt or second attempt, chances of you getting a good. Great example is Karun Nair Rahul. He got one opportunity after 8 or 10 years on an away tour, where also, like Sanju Samson, he was shunted up and down the order, and no matter how many runs he makes, the chances of him coming back to the Indian team are almost zero. We can see Mohammad Shami, who was absolutely in wonderful form. There was absolutely nothing wrong with him. He went through an injury and has not been able to make the main team, right? So India में इतनी competition है कि आपके पास 1 या 2 मौका मिलता है आपके हुनर दिखाने के लिए. अगर आपने अपना हुनर नहीं दिखाया उस गेम में, तो आप ड्रॉप हो जाओगे. संजू सैमसन अगर न्यूजीलैंड के लिए खेलते होंगे, तो you will not see him drop like this. Trust me, you watch Devon Conway और Rachin Ravindra play continuously, you can realize कि उनकी pool कितनी कम होगी. Because honestly, both Devon Conway and Rachin Ravindra haven't set the stage alight in any T20 game. So but they're still playing, right? So वहां पे pool कम है, तो you will need, you can't select more. यहाँ पे pool बहुत बड़ा है बॉस. pool बड़ा है, प्लेयर बाहर बैठे हैं, उनको मौका नहीं मिल रहा है. आप सोच रहे हो कि ऋषभ पंत बाहर बैठे हैं, केएल राहुल बाहर बैठे हैं, यशस्वी जायसवाल बाहर बैठे हैं. These are 3 just players that I can tell you. मोहम्मद शमी बॉलिंग में बैठे हैं बाहर, उनको मौका नहीं मिल रहा है. आप संजू सैमसन हो और आपने आपको दिए हुए मौका को नहीं यूज किया है. That is the fact of the matter. Sanju didn't use the opportunity he got for 5 games. It is unfortunate. I feel sorry for him because he's been shunted too much up the order and down the order. So it's unfortunate for him, but he hasn't made it easy for himself. So I wouldn't be disappointed. I would be disappointed if he's dropped. But it's not unfair on the Indian management if they drop him and put Ishan Kishan to open. Absolutely. तरुण, आज बड़ा एक अच्छा डिस्कशन हुआ आपके साथ में एक वर्ल्ड कप प्रीव्यू शो में, और हम लोगों ने काफी इम्पोर्टेंट चीजों पे बात करी, खुलकर और बड़े डिटेल में इंडिया पाकिस्तान मैच पे बात करी. उसमें क्या क्या एंगल्स हैं, गवर्नमेंट एंगल, पॉलिटिकल एंगल, बांग्लादेश एंगल, इंडियन टीम की कॉम्बिनेशन पे बात करी, और ऑफ कोर्स कि सुपर 8 का कैसा कंपोजिशन बैठेगा वो आपने बड़ा अच्छा समझाया. सो रियली अप्रिशिएट योर टाइम और जो आपने चीजें बताई. आई एम श्योर ये शो कोई भी देखेगा, पूरा डिटेल में देखेगा, पूरा देखेगा, तो उससे बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी. आज के समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और रविवार को हम हमारे रेगुलर स्लॉट पे फिर से मिलेंगे. थैंक यू. ऑल गुड. थैंक यू.